Hello guys, welcome to Shalakya Tantra lecture series. So in this video guys, we are going to study about Sandhigata Netra Roga, which is second part of our Sandhigata Rogas. In this we are going to learn about a modern diseases which are acute and chronic Dacryocystitis, Epiphora and Blepharitis. So let's start. Before going to the Dacryocystitis and other diseases, let's first see the brief anatomy of a lacrimal apparatus or the lacrimal glands. Okay, this is basically a typical lacrimal gland here present above the present near the outer canthus of the eye, and the channel emerging the point. This point is known as a punctum, the superior lacrimal punctum and inferior lacrimal punctum. Through this, a channel or canal this is flowing out is a channel. This is known as a superior lacrimal canaliculi and inferior lacrimal canaliculi, which again opens into a sac named as a lacrimal sac, okay, which drain into a duct known as nasolacrimal duct, NLD. Okay, this is a brief anatomy. Now let's deal with the diseases one by one. First of all, Dacryocystitis. Okay, the name itself suggests itis. Itis is nothing but inflammation of dacryo. Dacryo is a lacrimal. Okay, inflammation of lacrimal sac is known as Dacryocystitis. Okay, it usually occurs in infants or the persons over the age of 40 years. ये होता किस में है? अगर हुआ तो infants में तो होता, नहीं तो age of the person above 40 years. Okay, when we see the classification of Dacryocystitis, it is mainly divided into two: congenital and acquired. And acquired is of two types: chronic and acute. Okay, so let's study. First of all, the congenital Dacryocystitis has a name itself suggests congenital, so it basically happens to the infants. Okay, it occurs due to the failure of canalization of a nasolacrimal duct. Okay, as we all know, the nasolacrimal duct is present below the inner canthus of the eye. So if there is no canalization of nasolacrimal duct, there is no any flow that is being drained out to the nasolacrimal duct in the internal line. There is no canalization because the obstruction is been there, so it can lead to the bulging of the eye site of a lacrimal sac where the drains get collected. Now, clinical features, when you come to the clinical features of the congenital Dacryocystitis, there will be a main clinical feature epiphora. आपको epiphora दिखेगा हर एक eye disease में, ठीक है? Epiphora is nothing but the watering of the eye. आंख में पानी आना is nothing but epiphora, ठीक है? Which is followed by mucoid or mucopurulent discharge with the signs of conjunctivitis. Okay, now when this part is pressed, okay, when this sac is pressed, there will be a regurgitation of mucoid or mucopurulent matter after pressing it. Okay, these are some of the clinical features. Now when it comes to treatment, basically there are three types of treatment. Means, first of all, we advise the patient for a topical massage over the sac for 4 times a day, and we prescribe eye drops for containing antibiotic and cortisone in it. Okay, and after that, if it is not been relieved by massaging, okay, so next part we are going to do is probing of the nasolacrimal duct. As you can see in the image that there is being a probing done to the nasolacrimal duct. Okay, if it is to be done, it is given, first of all, it is done under GA, okay, general anesthesia with the help of a lacrimal probe and pump and dilator. First of all, the punctum has been dilated here with the dilator, and then the probing is inserted. Okay, and after that procedure is done, again the eye drops containing antibiotic and cortisone is been instilled to that side. Okay, and other one is मतलब अगर probing से भी हमको relief नहीं मिला तो ठीक है, the other procedure we are going to do is a balloon dacroplasty. Okay, incubation of NLD with silicone tube for 6 months, or DCT. Okay, dacryorhinostomy. Dacryocystomy is again surgical procedure which is to be done in case of congenital Dacryocystitis. Okay, clear है? अभी हम जाएंगे acute Dacryocystitis. Acute Dacryocystitis is nothing but a suppurative inflammation of lacrimal sac. Okay, same inflammation of lacrimal sac. Basically it is acute one. Okay, characterized by painful swelling in the lacrimal sac. यहाँ पे swelling is the main characteristic feature. Okay, remember it. Now, when it comes to etiology, the causes to factors, the acute stage of Dacryocystitis is preceded by chronic. Okay, chronic होने से पहले acute तो बनता ही है, वो पता है हमको. So normally the infectious agents that causing this acute Dacryocystitis are Streptococcus pneumoniae, Streptococcus Haemolyctus, and Staphylococcus aureus. Okay, these are the main of the bacterial infectious agents. Now, when it comes to pathology, okay, lacrimal sac is actually inflamed and filled with a frank pus. The typical feature of acute Dacryocystitis, you can see in the image here, it is inflamed and filled with a frank pus here. Lateral in the anterior sac
is ruptured and tissue surrounding the sac is also inflamed. Okay, first of all तो pus form होता है मतलब इनिशियल स्टेज में, फिर ये सराउंडिंग एरिया को भी मतलब इन्फेक्ट करके उस एरिया को भी इन्फ्लेम करता हो जाता है. ठीक है. एंड अगेन आफ्टर द सैक ऑफ सेलुलाइटिस, दैट स्टेज इज नोन एज सेलुलाइटिस एक्चुअली. ओके, पैरासिटाइटिस बोलते हैं उस स्टेज को. फिर अभी after that stage of cellulitis, that again the other stage comes to lacrimal abscess. There will be abscess formed after a particular inflammation. That lacrimal abscess is followed by perforation. एक perforation बनाएगा उसके surface में, leading to a fistula. Okay, lacrimal fistula is the third stage of acute dacryocystitis. These are these cellulitis, lacrimal abscess, and lacrimal fistula. After the drainage of the pus, the inflammation may subside. Okay, followed by a second attack, and after repeated attack, the sac becomes fibrous and shrunken. Okay, these are some of the pathology of the acute dacryocystitis. When we sum the typical clinical features, okay, the signs of inflammation of the sac area is been the main sign. Okay, as you can see in the figure, and then the epiphora and swelling are over the lid and the size of the nose. Okay, over the lid and the side of the nose, there will be epiphora and swelling. Epiphora is a common symptom. Just remember it. Epiphora is a common symptom of all the eye diseases. Okay, congestion and chemosis of conjunctiva, pyrexia and enlarged submaxillary lymph nodes is also been observed as a clinical features. And there is no regurgitation at all due to blocking of canalicula. ठीक है, अगर हम प्रेस भी करें ये सैक को तो रिगर्जिटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे. क्यों? बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकिंग ऑफ कैनालिकुला हियर. ठीक है, कैनालिकुला हमने पढ़ा था, हमने देखा था लैक्रिमल apparatus, इट इज प्रेजेंट, अब इट इज ड्रेन्ड इनटू अ फ्रॉम द punctum side. Okay, the fluctuation over the sac area, if abscess has formed, okay, opening of fistula over the sac area, fistula has formed. अगर abscess form हुआ तो there will fluctuation in the sac area. अगर fistula form हुआ, there will fistula form over the sac area. ये sac area है नॉर्मली, जो bulge part है वो sac area है. अगर fistula हुआ तो यहाँ पे fistula दिखेगा, abscess होता है abscess दिखेगा. fistula तो fistula दिखेगा, abscess हुआ तो abscess दिखेगा हमको. ठीक है. The common complications are osteomyelitis of the lacrimal bone. Okay, क्योंकि lacrimal bone involvement हुआ है surrounding stages में, so there may be osteomyelitis, lead to perforation of nasal cavity forming internal lacrimal fistula. Okay, and orbital cellulitis, facial cellulitis, and cavernous sinus. These are the main complications of acute dacryocystitis. Now when we come to the treatment of it, अगर हम फर्स्ट स्टेज में अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं जो कि सेलुलाइटिस स्टेज में है, तो बिफोर एब्सेस फॉर्मेशन वी कैन प्रोवाइड अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सच एज हॉट कंप्रेशन, एनाल्जेसिक्स प्रिफर कर सकते हैं हम, एंटीबायोटिक फॉर टॉपिकल ऑइंटमेंट दे सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली, और सिस्टमिक एंटीबायोटिक जो भी दे सकते हैं सिस्टमिक ट्रीटमेंट के लिए. अगर एब्सेस फॉर्म हुआ, ठीक है, it has come to the second stage that the abscess has been formed or the fistula has been formed, then the treatment advice is vertical incision is taken over the sac. When the inflammation subsides, DCT, that is diagnostic anastomy, or DCR or DCT should be done. Okay, if fistula is formed, fistulectomy along with DCT is done. If fistula has formed, DCR is not suitable here क्योंकि वो श्रंकन हुआ है, सैक ऑलरेडी श्रंकन होकर फिस्टुला फॉर्म, वहां पे अगर राइनोस्टोमी करे तो इट विल बी नॉट एनी, मतलब इट विल नॉट प्रोवाइड एनी बेटर रिजल्ट्स फॉर अस. सो डीसीटी इज फॉलोड आफ्टर फिस्टुलेक्टोमी. ओके, दिस इज द treatment procedure for acute dacryocystitis. Now after acute, let's see the chronic dacryocystitis. Okay, basically chronic dacryocystitis is a disease which happens to a particular age group of 40 to 60 years of a main gender. Infested mainly are female, almost 80%, and it is one of the heredity and happens to the people of low socioeconomic status and who maintains poor personal hygiene as well. Okay, the main etiology causative factor is narrowing of the bony nasolacrimal canal. The main causative factor here, okay, and hypertrophy. Hypertrophy of inner turbinate is nothing but hypertrophy is nothing but the inner fold develop होता है वहाँ पे, कहाँ पे nasolacrimal, either that has been narrowed or hypertrophy or DNS तो हुआ है, nasal polyp तो हुआ है, chronic rhinitis तो हुआ है, other factors तो हुआ है, जिसको हुआ है nasolacrimal duct को. ठीक है, canal को, duct को. Okay, other factors related to nasolacrimal duct will be the causative factor of chronic dacryocystitis. And the causative organisms are same,
which are causing the acute as well. Mainly Staphylococci, Pneumococci, Streptococcus, and Pseudomonas. Okay, these are the main bacterial infestations. Now, when we come to stages and clinical features, okay, the commonest symptom of all the stages are nothing but the watering of the eyes, the epiphora. Okay, and let's see the stages. These are chronic catarrhal stage. There are three stages mainly: chronic catarrhal stage, mucosal stage, and piosal stage. Okay, the main common symptom of epiphora, which are dealt earlier, and there will be no tenderness over eye. The अगर chronic हुआ है तो tenderness नहीं रहेगा, pain ज़्यादातर नहीं रहेगा, मतलब normally patient will say that he don't feel any pain over the area. अगर पेन दिख रहा है तो एक्यूट है, ठीक है. अगर टेंडरनेस नहीं है साइक के ऊपर प्रेस करे तो दैट विल बी अ स्टेज ऑफ chronic. Either it may be catarrhal or mucosal or piosal. Sorry. Now the other pattern of symptoms are in catarrhal stage there will be no swelling over the sac area. Okay, it will be a shrunken one. ठीक है. Mucosal में the sac area will be swollen and piosal में भी swollen. Swollen क्यों? क्यों इनके अंदर एक discharges material present है, ठीक है. And there will be mild hyperemia of the conjunctiva at the inner canthus, same as a mucosal. But here in piosal stage, the hyperemia becomes more pronounced. बढ़ के दिखा रहेगा, मतलब उसमें तो इसलिए it is become more pronounced in stage of piosal, क्योंकि it is a further more chronic stage, right? So after pressing in catarrhal stage, after pressing over the sac, there will no or very little regurgitation. जो कोई भी fluid बाहर नहीं आएगा, कोई भी discharge बाहर नहीं आएगा in catarrhal stage, क्योंकि वहाँ पे swelling भी नहीं है, ठीक है. Swelling भी नहीं है, discharge भी नहीं है वहाँ पे. But in mucosal stage and piosal stage, after pressing over the sac, the regurgitation happens to the puncta. The regurgitation matter is mucoid in the mucosal and mucopurulent in the piosal. It is to be remembered. Mucoid matter कहाँ से रिलीज हो रहा है? Mucosal से, और mucopurulent कहाँ से रिलीज हो रहा है? piosal से, ठीक है. piosal stage में अभी on syringing is a procedure, okay, जहाँ पे हम drain करते हैं, ठीक है. The fluid with the flakes of mucus regurgitates to the upper punctum. यहाँ पे fluid regurgitate होता है बोल रहा है, मगर ज्यादा होता नहीं है, बट यहाँ पे होता है. Mucus regurgitate to the upper punctum to the mucosal stage. Piosal में भी होता है, मगर mucus नहीं होता है, mucopurulent होता है, pus type. Okay, blood with a pus. This is mucopurulent. Okay, to the upper punctum. These are the three stages under signs and symptoms. Okay, clinical features normally. Now when we come to the complications, first of all, ये acute से chronic बना है, ठीक है. All the acute attack जो मतलब regularly होते थे वो जाके chronic बना है, तो it can lead to and again acute dacryocystitis as well, and other may be the development of corneal ulcer, which are known as hypopyon corneal ulcer also, and chronic conjunctivitis. Okay, these are some of the complications. Now when we come to the treatment of this chronic dacryocystitis, first of all, syringing of nasolacrimal duct is the first treatment in the initial stage, okay, where the lower punctum is dilated with the help of punctum dilator and the lacrimal cell is inserted into the canaliculus. Okay, thereafter lacrimal cell is attached to the canaliculus and the sac is integrated, okay, with the 10 ml solution of penicillin and repeated through syringing NLD through repeated syringing, okay, should be tried continuously. Okay, after if syringing fails, okay, the main surgical intervention here should be applied is DCR, which is dacryocystostomy. It is a typical procedure done when the sac is shrunken. When the sac is not shrunken, right? अगर shrunken नहीं है तो we कर सकते हैं. अगर sac shrunken हुआ है तो we will again move to the DCT. Okay, it will not be prescribed. Then in DCR, okay, the medial wall of the sac and the lateral wall of medial meatus of nasal cavities anastomose with each other, and we create an alternative passage for the tears through the nose. We will deal the DCR detail in the further slides. Okay, now let's move to the other procedure, it is DCT. DCT is done in the case when the sac becomes fibrous and shrunken. Okay, तभी कर सकते हैं. अगर not shrunken है तो DCR करेंगे. अगर shrunken हुआ है, वहाँ पे swelling नहीं है, fibrous है और shrunken हुआ है, तो DCT is the advised procedure to be followed. And here in DCT, normally the lacrimal sac is totally removed. Okay, unlike DCR, it is ideal surgery because there is a lifelong epiphora after DCT. यहाँ पे एक complication हमेशा रहेगा कि there will be watering of the eyes if the DCT procedure happened to a particular patient. It's to be noted. Okay. अभी हम एक procedure को जानेंगे. What is DCR? Dacryocystostomy. A procedure is mainly
done to restore the flow of tears into the nose, okay, from the lacrimal sac when the lacrimal duct does not function well. The DCT option can be performed by two techniques, जो कि कन्वेंशनल और क्लासिकल एक्सटर्नल अप्रोच, ओके, नॉर्मली डीसीआर बोलते हैं उसको। फिर अभी नया वाला है जो एंडोनेसल डीसीआर, जो नॉर्मली करते हैं थ्रू एंडोस्कोपी, ओके। एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज द एक्सटर्नल डीसीआर। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंसिजन ले रहे हैं, ठीक है, स्किन इंसिजन इज मिस्टेकन, ओके, दे आर क्रिएटेड अ पैसेज हियर, ओके, to a medial meatus, and then as you can see the typical blockage of the nasal lacrimal duct here, as you can see in the picture, okay, यहाँ पे एंडोस्कोपी जा रहा है, ठीक है। There are the two techniques, याद रखिए इसको, ठीक है। नाउ अभी हम कन्वेंशनल वे से पढ़ेंगे, एंडोस्कोपी हमको उतना जरूरी नहीं, मगर हमको ये याद रखना है कैसे करते हैं डीसीआर। कन्वेंशनल एक्सटर्नल अप्रोच कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थीसिया तो देना पड़ेगा हमको, जनरल एनेस्थीसिया इज प्रेफर्ड मेनली बिकॉज इट्स अ मोस्ट टीडियस प्रोसेस। तो हाउएवर इट मे परफॉर्म विद लोकल इन्फिल्ट्रेशन, एनेस्थीसिया लोकल भी दे सकते हैं मगर एडल्ट्स में, ठीक है। अगर बच्चों में और अगर एंगेज मतलब एल्डरली में दे रहे हैं तो वी जनरली गो टू जनरल एनेस्थीसिया, ओके। द स्किन इncision टेकन, okay, either curved incision, or along with the lacrimal or straight incision of 8 mm in the medial cathars of the eye is taken. Now after that the exposure of medial papillary lineament is been done, and anterior lacrimal crest as well. The NPL is exposed by blunt dissection and cut with the scissors to expose the anterior lacrimal crest, okay। the मतलब वो अगर इंसिजन लिए हैं तो इट द एक्सपोज क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, फिर हम डिसेक्ट करेंगे, डिसेक्ट करके पेरियोस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट अलोंग विद दिस, एंड द लैक्रिमल सैक इज रिफ्लेक्टेड एक्सपोजिंग लैक्रिमल फोसा। दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ओके। आपको ज्यादा मतलब इसमें घुसना नहीं है, ज्यादा मतलब डीपली मत जाओ यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर द प्रोसीजर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ नासल म्यूकोसा, ओके, डिसेक्शन करा हमने लैक्रिमल सैक का, ठीक है, एक एक क्रस्ट को मतलब सेपरेट करा, लैक्रिमल सैक को रिफ्लेक्ट करा, एक्सपोज करा लैक्रिमल फोसा को, फिर हमको क्या करना है? एक्सपोजर ऑफ नासल, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ये बनना है, मतलब बाईपास सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब दूसरा एक जगह बना रहे हैं कि वो टीयर्स जो भी मतलब लैक्रिमल सैक में जमा हो रहे थे वो हमको एक जगह बनाना है कि वो दूसरी जगह से फ्लो हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? नोज के पास बना रहे हैं मिडिल मियाटस से, ठीक है। तो हम एक्सपोजर ऑफ अभी नेशनल अभी हमने एक्सपोज किया लैक्रिमल आई की तरफ से, हमने एक्सपोज कर दिया। अभी ये दूसरा पार्ट जो भी है वो नेशनल के पार्ट में एक्सपोज करना है हमको। तो एक्सपोजर ऑफ नेशनल म्यूकोसा, a bony ostium is made by removing the anterior lacrimal crest, exposing thick pinkish white nasal mucosa here, ठीक है। Then the preparation of flaps of sac, a probe is introduced into the sac to the lower canalicular and sac is incised vertically, okay, incision लेंगे with the prepare, and to prepare the anterior and posterior flap the incision is covered with H shape, incision is covered with H shape, okay। ना तो suturing अभी हमने करा सब, मतलब हमने बनाया, एक जगह बनाया कि वो ड्रेन हो सके थ्रू द नोज। अभी उसके बाद तो suturing करेंगे, तो posterior flap of nasal mucosa sutures with the posterior flap of sac and is followed by suturing of anterior flap, okay। this is a closing procedure, and the closure is the mouth done by medial papillary lineament जो एक्सपोज हुआ था पेरियोस्टम से, उसको फिर क्लोज करेंगे, फिर ऑर्बिकुलरिस मसल सूचर करेंगे, स्किन इज क्लोज विद द सिल्क सूचर, ओके। सूचरिंग करके हमने ये प्रोसीजर खत्म कर लिया। दिस इज डाक्रोसिस्टोमी, ओके। नाउ द अदर प्रोसीजर इज डाक्रोसिस्टेक्टोमी। हियर मेनली द रिमूवल ऑफ लैक्रिमल सैक इज डन, ओके। इट इज टू बी रिमेंबर, क्यों? मतलब हमको वहां पे मतलब वो फाइब्रस हो चुका है, सैक का फाइब्रस हो चुका है, श्रंकन हो चुका है, हम वहां पे डीसीआर एडवाइज नहीं करेंगे, तो हम करेंगे डीसीटी, ठीक है। डीसीटी क्या करें? टोटल रिमूवल ऑफ लैक्रिमल सैक इज डन, ओके। Dacryocystomy is well established oculoplastic procedure that refers to complete surgical removal of lacrimal sac, okay। ये इमेज ध्यान से देखिए, मतलब आगे जाकर इसको डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द इंसिजन टेकन ऑफ द लाइन ऑफ द लैक्रिमल crest, okay। And these are the first procedure, and then direct exposing the structures here, okay। यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, फिर ये रिक्टाइड कर रहे हैं, फिर इसको निकाल रहे हैं, फिर इसको सूचरिंग कर रहे हैं, ठीक है। these are some of the procedure, okay। now let's see
Anesthesia, again GA, general anesthesia is prepared. Skin incision is taken, either curved or straight, 8 mm जो हम देखा था, सब प्रोसीजर सेम है, ठीक है, till the dissection of lacrimal sac. When the periosteum is separated from the anterior lacrimal crest, along with this, a lacrimal sac is reflected laterally with a blunt dissection, exposing the lacrimal fossa. Okay, फिर से सेम है, बट यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ लैक्रिमल सैक इज डन. वी आर नॉट creating a channel, okay, we are removing it totally. After exposing the sac, it is separated from surrounding structures by taking a blunt dissection followed by cutting its connection with the lacrimal canaliculus. तो lacrimal canaliculus के जो साथ जो lacrimal sac connected था उसको हम कट कर रहे हैं. It is then held with artery forceps, तो उसको ऐसे पकड़ते हैं, फिर ट्विस्ट करते हैं तीन से 4 टाइम, ओके, और उसको टीयर आउट ऐसे निकालते हैं कि मतलब टीयर इट अवे फ्रॉम द एनएलडी, नासोलैक्रिमल डक्ट. फिर हम क्यूरेटाइज करते हैं बोनी एनएलडी को. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ लैक्रिमल क्यूरेट with the removal of infected parts of membranous NLD. जो भी मतलब आजू बाजू में सराउंडिंग में जो इन्फेक्शन हुआ था उसको फिर क्यूरेटाइज करके उसको ये रिमूव करते हैं, ठीक है. फिर आफ्टर दैट medial papillary ligament is sutured to the periosteum and orbital muscle is sutured and skin is closed with the skin sutures. And the upper end of the duct with जो curated था and incision is closed by the sutures, उसको भी क्लोज करेंगे, ठीक है. फिर पोस्ट ऑप में फिर हम आते हैं, मतलब बोलते हैं कि ड्रेसिंग करते हैं उनको बार बार आने के लिए alternate days में, फिर स्टिचेस रिमूव करते हैं 7th डे को, ठीक है. दिस इज द टिपिकल dacryocystotomy, okay, procedure, surgical intervention. Now the next disease of eye is watering of the eye, that is epiphora. Epiphora, the term involves this disease involves 2 terms, okay, actually lacrimation and epiphora. We can't say अगर मतलब वाटरिंग मतलब आँख से पानी आ रहा है, एपिफोरा नहीं है वो, इट मे बी लैक्रामेशन, ओके. एपिफोरा व्हेन इट हैपेंस एक्चुअली ड्यू टू इम्पेयर्ड ड्रेनेज हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है टीयर्स को, तब भी एपिफोरा हो रहा है, ठीक है. मैं क्लियरली बोल दूंगा, ठीक है. लैक्रिमेशन इज नथिंग बट वाटरिंग ऑफ आई ड्यू टू एक्सेसिव टीयरिंग, ओके. एक्सेसिव टीयरिंग हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली तो मतलब नोज से भी पानी निकल रहा है उसका, मतलब ज्यादा ही रो रहा है वो आदमी, तो दैट इज नथिंग बट सिंपल टीयर्स और सिंपल लैक्रिमेशन. अगर वहां पे लैक्रिमल सैक ब्लॉक हुआ है, नासोलैक्रिमल डक्ट नैरो हुआ है, तो उसको जगह नहीं बचेगा मतलब कहीं और से मतलब पानी निकालने के लिए, तो उसके आंख से पानी आएगा बिना कोई रीजन के, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हुआ है नासोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है. दैट इज द कंडीशन विच लीड टू डिसीज कॉल्ड एपिफोरा, ठीक है. Now, the causes of epiphora, okay, physiological causes may be the lacrimal pump failure. जो lacrimal pump है वही फेल हुआ है, ठीक है. The laxity of eyelid, weakness of orbicularis oculi, these are some of the physiological causes. Mechanical causes are nothing but stenosis of punctum. ये जो punctum है यही stenosis हुआ है, ठीक है, मतलब यही narrow हो गया, तो ड्रेन कहाँ से करेगा, आँख से निकलेगा वो, तो ठीक है. particularly lower one which may be congenital or acquired. Obstruction of lower canaliculum है, मतलब कैनालिकुला में प्रॉब्लम है. तो स्ट्रक्चर्स तो ये है ना, पंक्टम है, कैनालिकुला है, सैक है, एनएलडी है, ठीक है. ये इन्हीं चीजों में अगर कुछ तो डिफॉर्मिटी हुआ है, कुछ तो मतलब कंडीशन हुआ है, तो ये हो रहा है, ठीक है. मीनिंग इज नथिंग बट पंक्टम में कुछ तो मतलब ये है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कैनालिकुला में, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सैक में है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनएलडी में है. दीज आर द मेन कॉजेस फॉर एपिफोरा, ठीक है. अभी क्लिनिकल एवेल्युएशन करेंगे, जब ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करेंगे तो हम पंक्टम को पहले एवेल्युएट करेंगे कि वहां तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. फिर रिगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे, तो जब वो निकलेगा वहां से तो पता चलेगा कि मतलब सैक में तो प्रॉब्लम नहीं है. फिर फ्लोरोसेंट डाई डिसिप्लिन टेस्ट करेंगे, हम मतलब डाई इंसर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है, फिर लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट तो करेंगे. दीस आर सम ऑफ द क्लिनिकल एवेल्युएशन टू सी वेयर द ऑब्स्ट्रक्शन हैज बीन हैम्पर्ड, ओके. नाउ द बेसिक ट्रीटमेंट इज द ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कहाँ पे हुआ है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक, अगर हमको लगा है कि स्टेनोसिस ऑफ पंक्टम में हुआ है तो लेजर पंक्टोप्लास्टी और एम्पुलेक्टोमी में बी यूज्ड एज एनलार्ज द फ्लो, ओके, आउटफ्लो ऑफ ऑरिफिस, ओके. देन इफ ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन लगा है हमको, मतलब कहीं तो मतलब पंक्टल एरिया में, कैनालिकुलर एरिया में, वहां पे अगर हमको लगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे हम डायलेट करके इरिगेशन कर सकते हैं. फिर अगर हमको लगा कि एनएलडी में प्रॉब्लम है, मेन नासोलैक्रिमल सिस्टम, नासोलैक्रिमल डक्ट में प्रॉब्लम है, तो the main go through intervention is DCR, okay, diagnostic rhinostomy is indicated.
अभी नेक्स्ट डिसीज है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस इज नथिंग बट अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिड मार्जिन। ये जो लिड मार्जिन है यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन दिख रहा है आपको, टिपिकल क्लिनिकल फीचर, दैट इज ब्लेफराइटिस। Due to contiguity of lid margin with the skin and conjunctiva, the margin of lid shares affection of both. Okay, वहाँ भी हो सकता है, लिड मार्जिन भी हो सकता है, लिड लैशेस में आपको थोड़ा सा दिखेगा, उसके साइड सर्कुलर एरियाज में दिखेगा, ठीक है। मेनली ब्लेफराइटिस चिल्ड्रन में होता है नॉर्मली, हम ज्यादातर में क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे होता है वो। तो दिस इज यूजुअली bilateral commonly occurs in children. The common cause of disease are dusty, windy, smoky atmosphere, use of cosmetic, errors of refraction, seborrhea of scalp, eczema of skin, chronic dacryocystitis, chronic conjunctivitis, parasitic infestation, excessive carbohydrate diet भी अगर ले रहे हैं, staphylococcus infection, तो that is the common eye disease. Okay. Now अगर हम types देखें ब्लेफराइटिस के, तो it is occurs in two forms. Okay, squamous, that is seborrheic, and ulcerative, that is staphylococcus. Okay, क्लियर है। सेबोरिक तो हो जाता है, सेबोरिक ऑफ स्कैल्प हो गया, आईलैश हो गया, इससे तो होता है तो उसको स्क्वामस बोलते हैं। अल्सरेटिव स्टेफिलोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सब पर्सन मिक्स्ड होते हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं, स्क्वामस हो सकता है, अल्सरेटिव हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वामस ब्लेफराइटिस, लेट्स स्क्वामस ब्लेफराइटिस, एज वी नो इट इज आल्सो नोन एज सबोरिया, सबोरिक। ओके, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सबोरिया ऑफ द स्कैल्प और आईब्रो और ईयर। अगर उसको सबोरिक पहले से है इन्फेस्टेशन, so this is a normal disease that can be हो सकता है उसकी वजह से। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वाइट ग्रीसी स्केल्स, as you can see white greasy scales are accumulated in lid margins. On removing the scales, the margin of lid appears red without ulceration. अगर वो निकाले ना तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, लिड मार्जिन पूरा रेड अल्सरेशन की तरह, ठीक है। एंड द आई लुक रेड रिम्ड एंड इट इज एसोसिएटेड विद एपिफोरा एंड डिस्कम्फर्ट। एपिफोरा तो रहता है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो रेड रिम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड देयर विल बी फॉलिंग ऑफ सिलिया बट दे आर रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल आईलैशेस। ये स्क्वैमस इज नथिंग बट इनिशियल स्टेज। ओके, अगर अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस हुआ है उसको, ये चिल्ड्रन में होता है क्योंकि पूरा जो मैंने बोला था, इट इज इन्फेक्शियस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, मतलब it is usually occur due to bacteria, right? It is infectious. So in this suppurative inflammation occur on the lid margin, follicles of eyelash along with the malls and these gland को भी affected है, ठीक है। तो there will be redness, swelling, itchy, soreness and formation of crust on the lid margin. Okay, same as that of squamous. Now यहाँ पे tiny ulcerated area related with roots of the eyelashes which may bleed easily become visible if crust are. अभी अब crust form हुआ है वहाँ पे, आप अगर crust remove करने गए तो वहाँ पे मतलब bleed होता है, ठीक है। ब्लीड होके फिर विजिबल होता है कि हमको मतलब आईलैश मतलब गिर रहे हैं, मतलब वहाँ पे रेडनेस रहता है, स्वेलिंग होता है, इचिंग रहता है, ऑलरेडी मतलब वो डिस्कम्फर्ट में है पेशेंट। फिर अभी हम रिमूव करने के अगर ब्लीड दिखा तो इट इज अ कंडीशन ऑफ अल्सरेटिव, यही हमको मतलब ये देखना है। देयर आर फॉलिंग ऑफ आईलैशेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलिकल्स। ओके, द लैशेस यूजुअली डू नॉट ग्रो अगेन बट सम ऑफ देम डू सो विद डिस्टॉर्शन। एपिफोरा इज आल्सो यूजुअल सिम्पटम। ओके, एपिफोरा तो रहता है। It is typical ulcerative blepharitis. Okay. Now, complication of blepharitis, the normally are conjunctivitis, okay, and superficial keratitis of the lower part of cornea, chronic meionitis, chronic meibomianitis, due to the inflammation of meibomian glands, okay, madarosis, missing eyelashes, stylosis, thickening of lid margin of stylosis, okay, trichiasis, okay. तो यहाँ पे आईलैशेस इनवर्ड ग्रो करना चालू करना, इसको ट्राइकैसिस बोलते हैं। दीज आर कॉम्प्लिकेशंस, ओके, ब्लेफराइटिस के। एक्ट्रोपियन, ओके, यहाँ पे आईलिड्स आउटर का मतलब टर्न होते हैं ऐसे घूमते कि बाहर की तरफ, ठीक है। दीज आर नथिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लेफराइटिस। अगर हम ट्रीटमेंट करें तो जनरली मतलब अभी हमको पता है कि ये हुआ क्यों है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करा पेशेंट, तो फर्स्ट हम बोलेंगे उनको कि अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए, अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में ध्यान रखिए, तो आधा काम वही खत्म हो गया आपका। फिर हम कॉज को ट्रीट करेंगे। अगर एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन रहे तो पर्टिकुलर लेंस यूज करने के लिए बोलेंगे, एलर्जी रहा तो कुछ तो प्रेस्क्राइब है। इफ एनी कॉम्प्लिकेशन लास्ट करेगा एंड तक तो ट्रीट अकॉर्डिंगली, हुआ तो सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। दिस इज इट, ओके, दिस इज आवर मॉडर्न पार्ट ऑफ संधिगत नेत्र रोग। थैंक यू।